हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज हमारे पास है सैमसंग का J7 नेक्स्ट। आप मॉडल नंबर देख सकते हैं। मॉडल नंबर है इसका SM J71F DS। ये J7 नेक्स्ट है। तो इसकी चार्जिंग इशू है, तो अब हम इसके चार्जिंग प्रॉब्लम ही सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं सॉकेट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो हम इसी को चेंज करेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसे पहले ही खोल दिया है। फ़ोन को आप खोलने के लिए सिंपली इसके बोल्ट खोल लें। और ये गाइस फ्रेम है, तो ये फोल्डर के साइड से ये फ्रेम अलग होगा। ओके फ्रेंड्स, फोल्डर अलग करने की ज़रूरत नहीं है इसमें हमें। फ्रेम अलग करने के बाद में हम इसका मदरबोर्ड अलग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जब ये मदरबोर्ड अलग कर लेंगे तब हम इसका चार्जिंग सॉकेट रिप्लेस करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो हमारा चार्जिंग सॉकेट अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके सभी प्रिंट अच्छे से सेट हो चुके हैं और इसके सारे पॉइंट्स भी अच्छे से बैठ चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं। मल्टीमीटर को हम डीसीबी 10 पे रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वोल्टेज आ चुके हैं, देख सकते हैं। तो हमारा चार्जिंग कंप्लीट है। ओके गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।